वंडरफुल वंडरफुल। क्या सीन है ब्रो? क्रेड का क्या सीन है? Isn't that a question that a lot of people ask कि भाई क्रेड बनाता कहाँ से है पैसे? How is Cred making money? How are they even profitable? Why are they burning so much cash? Why are they showing so many uh, advertisements on IPL during IPL etc. when they are not making cash and they are not making money? क्या सीन है ब्रो क्रेड का? लेट्स फाइंड आउट। इस वीडियो में आज हम यही फिगर आउट करेंगे कि हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। सो इस वीडियो में हम आज यही फिगर आउट करेंगे कि क्रेड का क्या सीन है, क्या क्रेड करना क्या चाहता है, क्रेड का करंट स्टेटस क्या है, वो कितने पैसे बना रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं, और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है कि आगे कैसे, क्या वो प्रॉफिटेबल हो पाएंगे कि नहीं। विल जस्ट लुक एट अ फ्यू डेटा पॉइंट्स। बहुत इन डेप्थ रिसर्च नहीं करी है वीडियो बनाने के लिए, एक दो आर्टिकल्स पढ़े हैं जो मेरे को लगा रेलेवेंट है, पढ़ने चाहिए। So what I will do in this video is that I'll just run you through what I learned about Cred, and yeah, let's see what happens. Awesome. So the first thing that we will do is कि मैं पहले तो अपने स्क्रीन शेयर करूंगा। स्क्रीन शेयर करके आपको एक ट्वीट दिखाऊंगा। ट्वीट है नन अदर देन कुणाल शाह का। ये ट्वीट उन्होंने डाला था 5 नवंबर 2018 में, दिवाली के दिन। आई एम होपिंग दिवाली थी बिकॉज हैप्पी दिवाली लिखा है, तो आई एम होपिंग उस दिन दिवाली थी, या एक दिन पहले भी हो सकता है, एक दिन बाद में भी हो सकता है, बट व्हाटएवर। उन्होंने 5 नवंबर 2018 को ये ट्वीट डाला और उन्होंने सिंपली ये लिखा कि एक्साइटेड टू अनाउंस क्रेड, my new startup after 3+ years of playing on the sidelines, a platform to celebrate and reward the most credit worthy people in India. Team working hard to get the beta out in a few weeks. Happy Diwali, everyone. And this is the first time I'm assuming the world got to know that Kunal Shah is going to launch something like Cred. And since then, the company, at least in terms of fundraising, hasn't looked back and has managed to raise a lot of money. Currently, they are sitting at a valuation of around $4 billion, $4 billion। रुपए में कितना होता है? रुपए में कन्वर्ट करते हैं, एक सेकेंड, कैलकुलेटर खोला जाए तो अराउंड 300 billion rupees is what Cred has already raised from the market. 300 million nahi, billion rupees is what Cred has raised from the market. This brings me to another point. It brings me to another tweet that Kunal Shah very recently made. Not very recently, I think it was, I think, a year back. But that doesn't matter. What's written in the tweet is what matters. So just, I'm sorry. I'm sorry for the delay. Yeah, so just let's just go through it and see what he has to say about fundraising, about burning cash, about burning equity, about running a funded company. I don't know why the fuck it's not opening. We'll cut it. We'll cut it. खुल जा भाई, खुल जा मेरे भाई, खुल जा मेरे भाई, खुल जा खुल जा खुल जा, खुल जा भाई। नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। अच्छा, कूल, परफेक्ट। सो कुणाल शाह बोलते हैं, ये बोल रहे हैं 1 दिसंबर 2020, ऑलमोस्ट 2 साल बाद उसके, कि मोस्ट स्टार्टअप्स दैट बर्न कैश आर एक्चुअली बर्निंग इक्विटी. Most founders for of hyper growth companies end up with small ownership. Why? To scale fast at the cost of ownership. Often, bootstrap founders become way more wealthier than funded ones, but only funded ones get the attention. So, मतलब
मतलब इतना पैसा आप उठा चुके हैं मार्केट से, इतना ज़्यादा फंड रेज़ आप कर चुके हैं मार्केट से, और आप एक ऐसा ट्वीट डालते हैं जहाँ पे आप बताते हैं कि अगर आप एक फाउंडर हैं, आप सजेस्ट कर रहे हो एक तरीके से कि अगर आप एक फाउंडर हो तो आप बूटस्ट्रैप रहो तो बेटर है। बट आप खुद बूटस्ट्रैप नहीं रह रहे, खुद आप कह रहे हो कि हम तो भैया फंड रेज़ करेंगे। हम भाई 300 बिलियन रुपीस फंड रेज़ करेंगे। हम 4 बिलियन नहीं, फंड रेज़ नहीं। नहीं, 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 दैट्स द वैल्यूएशन। हम एक $4 बिलियन की एक कंपनी बनाएंगे जो जिसका वैल्यूएशन बिफोर इवन इफ इट हिट्स आईपीओ इट्स इन लाइक $4 बिलियन बिफोर इट इवन हैज स्टार्टेड मेकिंग रेवेन्यू। तो क्या सीन है? क्रेड पैसे बना रहा है, पैसे जला रहा है? अगर जला रहा है तो कितने जला रहा है? और अगर बना रहा है तो कितने बना रहा है, और कितनी रेट से उसके जो रेवेन्यू बना रहा है वो इंक्रीज कर रहा है? ठीक है, सो लेट्स लुक एट दैट। ओके, फॉर दैट आई डिड अ bit of my research and I came across this article, which sounds legit because it's by Money Control and I sort of trust those guys. But let's go through that. It could also be a PR article by Cred, very well be a PR article by Cred. So, in that is the case, then by default आप परसेंट इन नंबर्स को कम कर देना खुद ही, क्योंकि थोड़ा बड़ा चढ़ा के तो बोलते ही हैं लोग पीआर में. So the article by Money Control says, which is like a very trusted body when it comes to financial reporting or anything related to money. It says Cred registers a 5x growth in financial year 2021 in terms of revenue, and their losses widened to around 524 crores. So they made a loss of around 524 crores and they grew their revenue by 5x. अच्छा, तो लॉसेस क्या था? मतलब लेट्स लुक एट कि लास्ट ईयर का लॉसेस क्या था. तो इट सेज क्रेड्स लॉसेस वाइडेंड बाय 45% ईयर ऑन ईयर टू 524 crore for the period ended March 31, 2021. So like March 31, 2021. Uh, uh, okay. So basically 2021 में इन लोगों ने अराउंड 524 crores का बर्न किया, compared to 2020 when they burned around 360 crores, which is an increase of around 45% in terms of the amount that they burned. So like 45% increase हुआ, around 160 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा इन्होंने बर्न किया. और 2021 में इन लोगों ने अराउंड $550 million का फंडिंग भी रेज किया. ठीक है, तो 45% इंक्रीज हुआ है. इसको लिख के कहीं रख लेते हैं, इसको इसको याद रखते हैं. 45% इंक्रीज इन देयर रेवेन्यू. बाकी what sorry, not in the revenue, in their losses. In terms of revenue, there is a 400% increase in its revenue. That's what, at least what they are saying. So in case if this is an article given by them, so you can by default reduce 30%, 30-40%, और उतना इनका revenue रहा है. तो 400% in revenue in the financial year 2020. And in 2021 they made a revenue of around 95 crores, so that's around 5 times, which is what the heading also says. It says 400% increase in revenue, so it's probably considering कि 18 करोड़ तो मान के ही चल रही है, 18 करोड़ तो हम बनाएंगे बनाएंगे, तो वहां से 4 गुना ऑन टॉप उन्होंने इंक्रीज किया. बेसिकली इंक्रीज बोल रहे हैं, इंक्रीज इन रेवेन्यू. तो ठीक है, विच मेक सेंस कि 400% इंक्रीज हुआ उनका रेवेन्यू. 5x उन्होंने ओवरऑल ग्रोथ दिखाई फ्रॉम वेयर दे वर a few days down the line. Like चूतिया बात कर दी ना, compared to financial year 2020. ठीक है, so they showed a growth in revenue of around 400% from 18.16 crore in financial year 2020 to 95.53 crores in financial year 2021,
which essentially means an increase of 5x in their revenue uh, in just 1 year time, which essentially is a very very good sign because 45% उनका increase हुआ उनका cost और उनका जो revenue increase है वो 5x हो गया from this point, which is not a bad thing at all. So let's understand how much did they spend on marketing. So they spent around 222 crores in marketing in financial year 2021 compared to financial year 2020 when they spent around 57 crores in marketing. Uh, okay, that's that's a 4x increase in marketing budget, and yeah, that's a 5x increase in marketing budget, is it? Yeah, that's around a 4x increase in marketing budget and a 5x increase in revenue. Now that doesn't make it look great then, because जितना आप अपना बजट स्पेंड इंक्रीज कर रहे हो उतना ही आपका बेसिकली रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, तो देर इज अ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन रेवेन्यू एंड marketing spend. Now it doesn't sound that great. It was sounding really good earlier, but now it's not sounding great. So in 2021, the startup raised 81 million in its Series C, 215 million in its Series D in 2021, financial year 2021. And finally, 251 millions in Series E, which means around 400 something million in just 1 year is what they raised. Okay. How do they make money? Show me how do they make money. Show me how do they make money. Okay, so in the last 1.5 years, Cred has built a loan book of 2000 crores. ओके, मतलब 2000 करोड़ के लोन्स इन्होंने बांटे हैं मार्केट में, जो कि ये लोग वापस भी रिकवर करेंगे तो उसमें कुछ इंटरेस्ट में तो शायद कमाएंगे ही। ठीक है। Acha, so basically it's payment business. So they also have this thing called credit pay. If you don't know, cred pay, if you don't know, essentially it's like, yeah, it's just like a Paytm for on cred, like basically like a payments platform on cred. And they did a transaction of around $500 million in the last financial year. Gross merchandise value on ठीक है, so they are not making money on this yet, but they did make a large amount of transaction via their cred pay in the financial year uh, 2021, which, and that is the end of this article, which essentially doesn't help me come to a definite conclusion, to be honest, about cred. But what we can say is that कि burn rate उनका कम हुआ है, and the rate at which revenue is increasing has basically like outperformed their burn rate, to be honest, which is a very good sign. But at the same time, they increased their revenue by 4x and their marketing spend also increased by 4x, which basically says that there is a direct correlation between the marketing spend and the revenue that they're making, which is not a good sign because the best businesses are the ones that have that delta 4, which is again कुणाल शाह की थ्योरी है डेल्टा 4 की, जिसमें वो कहते हैं कि अब डेल्टा 4 के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आप गूगल कर सकते हो, आप यूट्यूब कर सकते हो, देयर आर इनफ videos about delta 4. But cred is definitely by these numbers is definitely not a delta 4 business. Honestly, I am also a user of cred and I can say that I will not have any problem leaving cred and trying a different platform. uh, yeah, a lot of times I don't even use cred to pay my credit card bills,
But anyway, one thing I wanted to talk about, which I think Cred talks about in detail a lot, and मैं खाते खाते बोलूंगा क्योंकि भूख भी लगी हुई है, is its Cred coins. हर जगह उसी का ऐड करते रहते हैं. तो देखते हैं what people have to say about Cred coins. So let's go to Twitter and let's try to do our sentiment analysis and see what people might have to say about Cred coins. Sorry for the bad internet. I'm really, 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 really sorry. चेंज कराता हूँ अपना राउटर चेंज कराता हूँ. एयरटेल बस बोलते हैं, उनका भी मार्केटिंग कैंपेन ही है, मोस्ट रिलायबल नेटवर्क, बट काम नहीं करता. काम हमेशा ब्रॉडवे ही आता है, ना जियो फाइबर आता है. तो शुरू करे, चलेगा भाई. गुड, थैंक यू. सो लेट्स सर्च हैशटैग क्रेड कॉइन्स. So this is what people have said about Cred coin. So Cred is the most useless app. ठीक है, most useless app बोल दिया भाई. ठीक है, please convert all into cashback balance. At least it will be used somewhere. So this guy is also a little like he's giving ज्ञान to Cred, saying कि भाई convert ज्ञान क्या, actually काफी अच्छा feedback है, to be honest. Convert all Cred coins into cashback balance. At least it will be used somewhere. भाई वो चाहते ही नहीं है तो यूज करे भाई. अगर तूने सारे क्रेडिट कॉइन्स यूज कर दिए तो उनका दिवालिया निकल जाएगा. ठीक है, तो तेरे को देंगे नहीं कभी कैशबैक में, तो कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग अपने पार्टनरशिप से पैसे कमाते होंगे, जो भी प्रोडक्ट के साथ पार्टनरशिप होती है. फेक इल्यूजन बाय क्रेड. प्रोडक्ट 1 JBL स्पीकर, Amazon प्राइस 8638, क्रेड प्राइस 9449. सो बेसिकली क्रेड कॉइन्स कुछ है ही नहीं, बेसिकली रैंडम. विद क्रेड कॉइन्स, basically Harman headphones you are buying on Amazon at 5999, and sorry, without cred coin. Amazon में कहाँ होता है cred coin? And then with cred coin on cred app you get the same thing at 6075. तो क्यों ही कोई लेगा यार, क्यों ही कोई यूज करेगा जब क्रेड कॉइन्स यूज करके भी मतलब डिस्काउंट ऑफर नहीं करा पा रहे, और लास्ट बंदे को अगर एट द एंड ऑफ द डे एंड कंज्यूमर को नहीं मिल रहा है वो फायदा, तो कुछ फायदा नहीं है उसका. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. मे बी आई एम रॉन्ग. अच्छा, बाय द वे, मैंने टॉप ट्वीट से नहीं फिल्टर किया है, मैंने लेटेस्ट से फिल्टर किया है. सो व्हाट पीपल आर सेइंग इन रियल टाइम, वी आर एबल टू सी दैट. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ क्रेड कॉइन्स? आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट यूजलेस ऐप एवर. ठीक है भाई, कुछ तो अच्छा बोलो. आई हैव 7 lakh in credit coin, what should I do? He doesn't know how to use it credit coin. बेचारे ने सोचा होगा कि इतने सारे क्रेडिट कॉइन्स इकट्ठे करूंगा और फिर कुछ क्या लैम्बोर्गिनी खरीदूंगा, क्या खरीदूंगा, बट कुछ मिल नहीं रहा है बेचारे को. इट्स कूड़े के भाव जा रहे हैं भाई क्रेडिट कॉइन्स. Obviously he got a truckload of credit. ठीक है, so cred bounty is just a child's play and nothing else. Worst app cred, no one uses cred coins. No use of cred coins. I have accumulated 4 lakh cred coins. Can anyone suggest me a really good way to using? I'm not really into buying fancy stuff. No, bro, you have to just buy fancy stuff in order to use the cred coin.
Cred is by far the worst ever payment rewarding app. Been paying bills for over of 20K constantly on time, and they reward you with a cashback of 7 rupees upon deducting 10,000. High time that people realize that it's a trap. अच्छा भाई क्यों छोड़ के जा रहे हो क्या? Has anyone really benefited by redeeming credit coins? Cashback amount against coin redemption is pathetic, so it's ruled out, I guess. Credit coins like no one is, so basically जो समझ आ रहा है जनता का वर्डिक्ट जो समझ आ रहा है वो जनता का वर्डिक्ट ये है कि किसी को क्रेडिट कॉइन्स तो पसंद नहीं है or I think it's causing more harm to cred than causing. That's my personal opinion. I think that's it's causing more harm to cred than causing any benefits. But again, I'm not sitting on top of their internal data. They probably are taking the right decisions. You don't know. In terms of the information जो हम देख सकते हैं इंटरनेट पे, उससे अपने को ये समझ आ रहा है कि भाई बहुत फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप तो नहीं है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू तो फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप नहीं है. कम्युनिटी गेम वो खेल सकते हैं बट कम्युनिटी वाली फीलिंग नहीं आती, क्योंकि मैं खुद क्रेड यूजर हूं, आई कैन टेल यू कम्युनिटी वाली फीलिंग नहीं आती. बट शायद कर रहे होंगे, फिगर आउट कर रहे होंगे. इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ देयर ओवरऑल बर्न, सिर्फ 45% इंक्रीज हुआ है ओवरऑल बर्न में, और रेवेन्यू 5x इंक्रीज हुआ है. बट एक अंडरलाइंग चीज है कि उनका मार्केटिंग बजट 4x इंक्रीज हुआ है उसी पीरियड ऑफ टाइम में. तो ऐसा हो सकता है कि रेवेन्यू इंक्रीज मार्केटिंग का फंक्शन हो. तो ऑल इन ऑल what we can say is you can't really say anything about cred with conclusion, like with any conclusion at this point in time. फ्रॉम वेयर आई एम सिटिंग राइट नाउ, जहां पे मैं बैठा हुआ हूँ, जो चीज जो इन्फॉर्मेशन मैं देख पा रहा हूँ, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लगता नहीं है कि बहुत अच्छा चल रहा है. आई एम श्योर वो लोग फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसको फिगर आउट कर लें. बट by what I can see and by what I understand and the feedback that I see on Twitter, it doesn't look a very good picture, I'm afraid. So at the end of the day, you are free to form your opinions. I am just saying what I think is the right, is what I understand of it based on my limited understanding of the startup world. I in no way I call myself a startup guru or something. So whatever I say, please ensure that you're rechecking it, you're doing your own research before you're forming any opinion. And on that note, I will close this video. This is my second video, so forgive me in case what I'm saying is not making sense to you, or if you don't agree with me. I would love to know about your disagreements in the chat, in the comment below. Not in the chat, it's not a live video. So in the comment below, do let me know about things that you disagree with, things that I can improve. Please understand that I cannot make a very high quality video because of constraint of time. I myself am a startup founder and I'm running a company that is into climate tech, and we help reverse climate change using technology and software. But yeah, I'll be more than happy to hear what you have to say about what I am saying. And if you have other ideas, if you have topics that you think I can make videos about, if you know some interesting Twitter thread that you think that I can sort of go through for my audience, I'll be more than happy to do that. Till then, sayonara. Have a wonderful time. If you're a startup founder, I know things are tough. Everything will just be fine. It's a matter of time. Have a good evening, good morning, good afternoon, depending on when you're watching this. This is Sachin Sengar, and I'm signing off.